Good afternoon, everyone. Welcome to BYJU'S exam prep. My name is Naveen, and today we will be doing part 3 of Games and Tournament for CAT 2023. And we will be looking at the conventional types of sets. The conventional types of sets are generally related to, the basic league structure, which is also known as round robin, or the miscellaneous types, very basic ones. The kind of games or the tournament rules that everybody is aware of. Okay, we saw a couple of similar questions when it comes to knockout in the previous session. If you guys haven't watched it yet, make sure that you go to the channel list and you watch it. So let's start with our today's set. Okay, so this is the first set that we have. Looks like I'll have to hide myself. Yeah, good afternoon, Devika. So 5 players participated in a race tournament. 5 races were held in the tournament such that in each race exactly 4 players participated. Every player participated in equal number of races. The winner gets 10 points. First runner-up gets 5 points. The second runner-up gets 2 points. The player who comes last does not get any point. There were no ties in any race. And the table given below shows the number of points scored by each player at the end of the tournament. Okay, so there are 5 players and there were 5 races, right? Such that in each race exactly 4 players participated. Well, we can have, I don't know the race number, right? It's not mentioned what is the sequence, but in the one of the races, PQRS participated and T was not there. In the other race, PQR and T participated, S was missing. In the next race, PQ, S and T participated, R did not. फोर्थ रेस में Q को मिस कर दिया होगा इन्होंने और RST participated further. In the fifth one, P did not participate, Q, R, S and T participate. So can we say 5 races were held in the tournament such that in each race exactly 4 players participated and every player participated in equal number of races. So P participated in 4 races. देखो P 4 जगह लिखा हुआ है. Q participated in 4 races. Q is also written 4 times and so does R and S and T. Okay. अब यहाँ पे in any race यहाँ पर 4 लोग दौड़ रहे हैं. So first, second, third and fourth position आता होगा, right? हर रेस की बात करें. Not necessarily PQRS, it can be any other race. हो सकता है ये जो 5th रेस था इसमें QRST दौड़े थे. उसमें से कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ. The winner, whoever comes first, gets 10 points. First runner up यानी कि second जो आया उसको 5 points. Second runner up gets 2 points यानी जो third आया. And the player who comes last does not get any point. उस भाई साहब को कुछ नहीं मिलेगा. There were no ties in any race. ठीक है, यानी कि no 2 people will get 2 points in the same race or 5 points in the same race. And in the table, the final points after the 5 races were concluded is given. So I hope this part is understood. Hi, Sonu. Right? Now, having known this, इसको अब represent कैसे करें? So obviously we will need a table very similar to this. पर उसमें से देखना पड़ेगा कि कितने तरीके हैं इनको बनाने के. For example, remember, P के पास केवल 4 races हैं. And 4 races में 20 points score करना है. So can we say that, and this is not true for just P, it is true for everybody. So can we say कि P का जो 20 है, this could come as 10, 10, 0, 0? मतलब 2 में first किया, 2 में last. या फिर maybe 10, 5, 5 and 0? और या फिर सब में ये भाई साहब second आए. सब में मतलब in all the 4 races that P participated. ठीक है. So these are the 3 possibilities. Can we have further possibility to make 20? 20 बना सकते हैं हम लोग 2, 2, 2, 2 से, but we will need at least 5 races there. पर हमारे पास तो P के 4 ही रेस हैं. Okay. Q का 19 बनाना है. So for 19 we can have 5, 2, 2. So we can have 10, 5, 2, 2. और कोई पॉसिबिलिटी है?
केवल 2 to 2 लेंगे तो it will become more than 5 races, right? So there is only one possibility, which is 19 का 10 5 2 2 से. Okay, now what about 17? Now 17 is 5 plus 2, right? तो इस भाई साहब को आ सकता है 10 5 2, that is 17. Or what we can do is like we can break this 10 as 5 5 and then 5 and 2. R के भी 4 रेसेस में उसके स्कोर ये सारे हो जाएंगे. और कोई तरीका 17 का? 8 plus 9 and 10 plus 8, ना, नहीं हो सकता. So 12 plus 5 is another case, but 12 itself will take us 6 races. लेकिन R के पास 4 ही रेस है. Okay, now next, how about 14? Well, we can make 14 as 10 2 2 0. So this is 10 plus 4. Or we can have 5 5 2 2. So that is 14. Can we make 14 in any other way? We can have 8 plus 6. नहीं बनेगा. 10 plus 10 वाला कर चुके. So these are the only two ways by which S can have 14, right? Now what about T? T ka 15 we can have is simply 10 5 0 0. Okay, we can also have, we can break down 10 as 5 5 5 and 0. और कोई तरीका? 2s से तो नहीं बनेगा. Okay, so these are different ways by which each of the points, total points, can be formed, out of which only Q ka points is kind of fixed, right? Okay, now please remember that there are 4 races that are supposed to happen, है ना? 4 races में कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा, कोई ना कोई तो सेकंड आएगा, कोई ना कोई तो थर्ड आएगा. In other words, overall, 5 races. So overall, we should see 5 10s, 5 5s, 5 2s and 5 zeros. हर रेस के लिए ये स्कोरिंग होगा, right? So since Q's part is fixed, can we say 1 10, 1 5 and 2 2s? ये तो यूटिलाइज हो ही गए, right? Now we can have the further combinations. Further combination का मतलब है, now if we look at R, तो R के पास एक 5 तो for sure आएगा और एक 2 भी आएगा ही, है ना? So 1 5 and 1 2 is a definite thing out of here. इधर में तो पूरा 10 5 2 2 definite है. So if we have 1 5 and 1 2 taken, we are left with 3 5s. If we are left with 3 5s, मतलब ये 4 5 वाला केस नहीं बन सकता, क्योंकि उतने 5s बचे ही नहीं है, right? So 1 5 and 1 2 is definitely going to come out of R. If you look at S, S में से दो कुछ भी कर लो आप, we will definitely have 2 2 from here. So 2 2 is done. Right? Okay. We need 3 5s. So 3 5s we can have is 3 5s from here and no 5 from here. And we can have 1 5 from here and 2 5s from here. जब वो होगा तो इधर कुछ कुछ होगा. So there are a lot of combinations or cases that we have to make. ठीक है? तो एक काम करते हैं, let's draw a table. Let's redo the same thing. Okay, let's quickly write it down. So स्टार्ट करते हैं. Q का फिक्स है, राइट? Q is fixed as 10 5 2 and 2. ठीक है? एंड क्विकली लेट्स राइट डाउन 10 10 10 10 10 5 बार आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. For each of the races, these points are definitely awarded, isn't it? चलो, तो जो होते जाएगा we will strike it out. Since we have 10 5 2 2, so we will remove 10 5 2 and 2. ठीक है? अब अपन करते हैं P का. So P का we can have 10 10
0, 0. Now the moment we have two tens involved, है ना, तो हमें दो 10 और चाहिए. So the two tens we can have is by taking 10, 5, 2, 0. हमारे पास एक 5 हुआ है और हमें चार 5 सॉल्व करने हैं. So we can have 10, 5, 2, 0, 10, 2, 2, 0. So we can have 10, 5, 2, 0, 10, 2, 2, 0 and 5, 5, 0. Right? क्योंकि हमारे उतने सारे फिक्स करने हैं. So how many tens do we see? 1, 2, 3, 4. अच्छा, we need one more 10, right? So we need to have 10, 5, 0, 0. So we can have 10, 5, 0, 0. So we have 5 tens that we see. We have 1, 2, 3. Only 3 5s that we are seeing. अच्छा, पहला वाला ठीक तो था, काउंटिंग गड़बड़ है. Okay. So we have for T we will take 5, 5, 0 so that we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 tens. We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 twos. 5 5s, sorry. We have 1, 2, 3, 4, 5. 5 twos. So 10 5 बार है, 5 5 बार है, 2 5 बार है, 0 5 बार है. ठीक है? So this is one possibility. The other is if we write 10 5 2 2, Q का क्योंकि फिक्स है, right? And if we take 10 10 0 0 for P, so we have so far taken care of 3 tens. हमें दो 10 और चाहिए. So दो 10 from R, S and T says that we are going to have we require 4 more 5s, right? So 4 5s we can have is 5 5 2 from R. 3 5 R से ले लेते हैं, right? और एक 5 T से ले लेते हैं. So 10 5 0 0. अब हमें S से एक भी 5 नहीं चाहिए. So we will be taking the combination 10 2 2 0. So this 10 2 2 0 will continue. So let's count the number of tens here. 1 2 3 4 5 5 tens. 1 2 3 4 5 5 5s. 1 2 3 4 5 5 twos. So this is another possibility. फिर से Q को फिक्स करते हैं. Let's fix P again. So P and Q we have fixed initially. ठीक है? Now एक बार 3 5 T से आया, एक बार 3 5 R से आया. ठीक है? Out of 5 5s. What if I don't take 3 5s and 3 5s from both? We won't have enough number of 5s. मतलब R या T से 3 5 तो आना ही पड़ेगा, right? So we really can't do anything about that. अब P को चेंज करते हैं 10 5 5 0 से. So P के दो केसेस हो गए. Now 10 5 5 0. If we take 10 5 5 0, so we have 2 tens used and 3 5s. We need 2 more 5s. If we need 2 more 5s, we can't be taking 5 5 2 and 5 5 0. And we are pretty sure कि एक 5 10 5 2 0 of R से आ जाएगा और एक 5 10 5 0 0 of T से आएगा. So we will have 2 5s, single 5, 3 5, 4 5, 5 5s. So we are supposed to take 10 2 2 0 only. So this is going to be 10 5 2 0. This is going to be 10 2 2 0 and this is going to be 10 5 0 0. Okay, so let's count the number of tens. 10 is there in each of them. 5 हमारे पास P के दो हैं, Q में एक है, R में एक है, that is 1 2 3 4 and 1 5 is from T. The number of twos we have is 1 2 3 4 5. So QRS में ही 2 complete हो जाता है. Okay. Can we have any other possibility of 10 5 5 0? So 3 5s are done, 2 more 5s required. We can't take 5 5 2. And we have 5 5 2 2. Did we use it?
Okay, for 5522 we need 1 2 3 4 and 5. So there is one more that we can take care of because we haven't done. देखो S में एक 5522 है एंड Q का तो 10522 है ही, Q का तो फिक्स है. So the number of fives you will see is 3. We need 2 more fives. 2 more fives में से एक 5 तो R और एक 5 T से तो आना ही आना है. So we will not take any 5 from P. So we will take 10 10 0 0. एक single 5 from R and a single 5 from T. Don't worry about the number of 2's. It will automatically get adjusted. Okay. So we are only looking at number of 10s being 5 and number of 5's being 5. So 10 count करोगे 1 2 3 4 5 5 tens. Number of 5's is 1 2 3 4 5. Number of 2's is also 5. So this is another combination. So is there any repetition of? नहीं, कोई repetition नहीं है, सारे unique हैं. So these 4 cases we are going to have. ठीक है, case 1 2 3 4. हिमांशु प्रैक्टिस से ठीक होगा. एंड हृतिक लैंग्वेज और किस तरह का पूछा गया क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है. समटाइम्स नॉकआउट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स राउंड रॉबिन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो यू हैव टू एक्चुअली डू बोथ ऑफ देम. इजी होगा तो बहुत इजी होगा, डिफिकल्ट होगा तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा. ठीक है, तो केसेस तो बनाने पड़ते हैं इन ईच ऑफ द 2 टाइप्स. ठीक है, इट्स वेरी रेयर दैट यू गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड एवरीथिंग कंप्लीट. जैसे इधर 4 केसेस बने अभी तक क्या, आई थिंक ओनली 4 केसेस विल हैपन. ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगा, देयर इज नो अदर वे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स कैन नॉट फिनिश लास्ट इन रेस, इन एनी रेस. लास्ट आने का मतलब उसको 0 पॉइंट नहीं आना चाहिए. तो किसको 0 पॉइंट नहीं आ सकता? So if you look at P, P can get 0, R can also get 0, S and T also can get 0. एक किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में तो पॉसिबल है. Q को कभी भी 0 नहीं आएगा. So Q did not come last in any of the races. Okay. Next, which of the following players cannot be that player who did not finish last in any race in which he participated? ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको जो लास्ट आएगा ही आएगा किसी ना किसी रेस में, इन एनी कॉम्बिनेशन यू टेक. मतलब किसके कॉलम में 0 दिखेगा ही दिखेगा. सो इफ यू लुक एट P में 0 तो आएगा ही आएगा. सो P इज गोइंग टू कम लास्ट इन वन ऑफ द 4 रेसेस ऑफ हिज फॉर श्योर. Q तो कभी 0 नहीं आएगा. R में 0 हो भी सकता है, नहीं भी. S में 0 हो भी सकता है, नहीं भी. एंड T विल अगेन जस्ट लाइक P विल डेफिनेटली कम लास्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स रेसेस. So can we say P and T? दो ऐसे लोग हैं for whom we can say that they cannot be the player who did not finish last in any of the races they participated. Now between P and T, T नहीं है, P है, तो ठीक है, P है तो P मार्क करेंगे. T होता तो दोनों तो नहीं देंगे, नहीं तो मार्क क्या करेंगे, right? Next, if every player won at least one race, there is a comma. Let's take a pause and think about this. If every player won at least one race means हर player को 10 तो आना ही आना चाहिए. So let's go and check which cases are we talking about. In the first case T तो first नहीं आया. In the next race R first कभी नहीं आया. Okay. In the last race S first नहीं आया. So we are talking about the third possibility. The third possibility is there where PQ RST किसी न किसी को 10 आया. मतलब वो फर्स्ट कभी ना कभी किसी कॉम्बिनेशन में तो क्या ही था, राइट? ओके, सो एवरी प्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू. P वाज द विनर इन 2 रेसेस. नहीं, P को सबको एक बार 10 आया ना, तो P को 2 बार 10 कैसे आ सकता है? He cannot be winner. Every player was first runner up in at least one race. So हर प्लेयर को 5 मिलेगा ही मिलेगा. We can see that S never gets a 5. He is not the first runner up. So ये भी false हो गया. Only one player was able to score in all races in which he participated. It means कि last जो है 5 में से 4 लोग आए
कभी ना कभी किसी रेस में एक बंदा नहीं आया. So this is true. P came last, R came last, S and T also came last in at least one of the races. It was only Q who did not come last. So the answer is going to be third. Third is definitely true. C option. Okay. Okay, next question. If one of the players finished at same position in exactly 3 races, there is a comma. Let's take a pause and think about it. If one of the players finished at same position in exactly 3 races, मतलब उस player के column में we should be seeing the same number 3 times. Let's see किस player में दिख रहा है 3 times. In the first combination, we see 5 3 times here. In the next one में R में दिख रहा है, T में दिखा, R में दिखा. In third case, we don't see the same number written 3 times for any of the players. In the last one also we don't see. So we're talking about the scenarios first and second. ये दो cases में. Now the question asked is, which of the following can never be true? Can never be true को change करके आप समझ लो will always be false. Always क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि in both the cases it should be false. So statement A says P won exactly 2 races. P won exactly 2 races. ये तो true है. Right? ये तो true हो गया. B says T did not win any race. T did not win any race. ये may be true है, may be false है, क्योंकि एक में तो T को 10 आया और एक में नहीं आया. So T did win one race and T did not win any of the races. यहाँ तो definitely false बोल रहे हैं. तो ये तो may be scenario है. So this can't be our answer. R did not win any race. यानी R को 10 नहीं आया. This is again maybe का scenario. Right? He may win one of the races, he may not win one of the races. Right? तो ले दे के एक D ही हो गया. Because A is true, B and C may be true. हमें पूछा जा रहा है which of the following is false. हमें false तो नहीं मिला. Right? So D becomes our answer. So D is the answer. ठीक है, अब next set आएगा. So I hope this part is clear. ठीक है? So this was a good question, right? We had to make the cases, all the possibilities, and for that you have to be a little, confident in your ability of making cases, because once you realize that Q is fixed, and then you realize कि भाई P में से एक 10 तो आएगा ही आएगा. You can't stop it. एक 10 तो देखो बनेगा ही बनेगा. Similarly from R, you will definitely get out a 5 and a 2, क्योंकि दो cases है, दोनों में एक 5 और 2 तो दिख ही रहे हैं. Right? From S, no matter what you do, ये दो 2 तो बाहर आएंगे ही आएंगे. As in बाहर, as in they are common. They definitely do exist. And similarly for T, there is definitely going to be 1 5 outside. So these things are sure कि 8 10 2 5s and 3 2s तो होंगे ही होंगे use. We had to make the other possibilities. उस पे थोड़ा सा practice करो उन approaches पे, you will realize that it's always feasible and it's always possible even in the exam duration कि आप cases ये सारे बना सको without making any mistake. ठीक है? Now let's move to the next set. Read the information given and answer the following questions. An international football tournament consisted of 4 teams, namely France, Italy, Portugal, and Spain. Each team played against every other team exactly once. If a match ended in a draw, both the teams were offered 1 point each. Otherwise, the winning team in a match was offered 3 points, and the losing team was not offered any point. The following table gives information about the performance of the teams in the tournament. So France has got a total of 7 points. ठीक है? Total number of goals scored is 8 and total number of goals against scored is 5. Similarly, Italy को 4 आया, इसको भी 4 आया, Spain को 1 आया. ये सारे points इनको आए हैं और goals कितने करे हैं और कितने उनके against हुए हैं. This value is missing. It's not 0 there. 0 होता तो 0 लिखा हुआ होता.
Additionally, the following points are known. The match between Portugal and Spain was drawn with both the teams scoring 3 goals each, and Spain lost one match by a margin of 5 goals. So a standard round robin or a league match scenario. So since there are 4 teams, how do we proceed कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी? तो इसके हमेशा 2 steps होते हैं. The first step is to find the number of matches being played. Number of matches being played is always given as number of teams into the next smaller number divided by 2, जिसको अपन NC2 भी बोलते हैं. ठीक है, सॉल्व करोगे पता चलेगा टोटल 6 मैच होने चाहिए. सेकेंड थिंग इज कि हर टीम कितना मैच खेलेगी. सो सिंस देयर आर 4 टीम्स, सो एवरी टीम विल प्ले 3 मैचेस. फ्रांस इटली 1 मैच, फ्रांस पोर्तुगल दूसरा, स्पेन और फ्रांस तीसरा. इटली का देखोगे तो इटली को भी 3 मैच खेलने, एक फ्रांस के साथ, एक पोर्तुगल, एक स्पेन. राइट, सो एवरी टीम विल प्ले 3 मैचेस. एंड नाउ द थर्ड पार्ट कम्स इन, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप मैट्रिक्स ड्रॉ करते हो. राइट, सो यू विल बी ड्रॉइंग अ मैट्रिक्स विथ द नंबर ऑफ टीम्स के बराबर कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ टीम्स के बराबर रोज. So we have FIPS, France, Italy, Portugal, Spain, France, Italy, Portugal, and Spain. Each cell represents the match played between the teams. So primary diagonal को cancel out कर दो because France will not play against France. Now second row first column and first row second column, ये दोनों cells same match के बारे में बात कर रहा है. This is talking about the match between Italy and France, and this is also the match between Italy and France. So we have to only take one because each team plays every other team exactly once. तो आप ऊपर वाला triangle जो है वो आप cancel out कर दो, मतलब those cells should not be used. So these are the 6 matches that we are talking about. जो formula से निकल कर आया ना, वो ये 6 मैच है जो होने वाले हैं, which is known as the lower triangular part of this matrix. Now, अब इन 6 मैचेस में हमें क्या करना है कि फ्रांस के 7 पॉइंट्स करने हैं. सो हाउ विल समबडी गेट 7 पॉइंट्स? द पॉइंट्स ऑफर्ड आर 3, 1 and 0. 3 for a win, 1 for a draw and 0 for a loss. So 7 कैसे बन सकता है? वेल, और याद रखना फ्रांस को 3 ही मैच खेलना है, मतलब 3 मैच में ही 7 पॉइंट्स बनाने का है ना. दिस इज नॉट ट्रू फॉर जस्ट फ्रांस, दिस इज ट्रू फॉर एवरी अदर कंट्री हियर. दिस इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो. हर बंदा 4 ही रेस कर रहा था और उन 4 में उसको 20, 19, 14, 15 पॉइंट्स बनाने थे. Same thing here, 3 matches only. So France has to make 7. This is, I believe, the only possibility if it's going to be 3-3-1. और कुछ नहीं कर सकते. फ्रांस यानी कि 2 जीता, 1 ड्रॉ हुआ, उसका लूज नहीं किया फ्रांस किसी से. नेक्स्ट इज इटली का 4 कैसे बन सकता है? सो इटली का 4 जो बनेगा, दैट विल ओनली हैपन बाय टेकिंग 3, 1 and 0. क्योंकि 1, 1, 1 लेंगे तो 4 लेने पड़ेंगे, तो यानी 4 मैचेस पर उतने तो खेले नहीं. सिमिलरली फॉर पोर्टुगल, हाउ विल वी गेट 4? विद जस्ट ऑफ 4 के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, विच इज 3, 1, 0. एंड नाउ फॉर स्पेन वी नीड अ 1, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट्स गोइंग टू बी 1, 0, 0. जहां भी 1 दिख रहा है ना, ये ड्रॉ है. सो फ्रांस एंड इटली का ड्रॉ होगा तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलेंगे, राइट? सो द पॉइंट्स आर शेयर्ड. So it is given that the match between Portugal and Spain was a draw. So जो ये 1-1 है ना, ये पोर्टुगल स्पेन का ड्रॉ है. So that means ये 1-1 फ्रांस और इटली का ड्रॉ है, right? So we can understand that ये जो मैच फ्रांस और इटली का हुआ था, ये ड्रॉ हुआ था. That means the other 2 matches France won. We are going to use this approach. ठीक है, but we need a larger matrix and पूरा चीज कंप्लीट चाहिए. तो नेक्स्ट स्लाइड के एनालिसिस पे चलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग. ठीक है, फ्रांस को 7 चाहिए, विच इज 3, 3, 1. इटली को आपको 4 चाहिए, विच इज 3, 1 and 0. पोर्तुगल को 4 चाहिए, विच इज अगेन 3, 1, 0. एंड स्पेन नीड्स 1, so this is 1, 0, 0. Now we also know that the match between Portugal and Spain was a draw. So ये 1 इस 1 के साथ जाएगा. That means the other 2 ones are these 2. So let's fill it up. So the
ड्रॉ हैपेंड बिटवीन फ्रांस एंड इटली, सो ये फ्रांस और इटली के बीच में ये मैच ड्रॉ था। ड्रॉ के लिए मैं हाइफन लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाइफन की आई विल नॉट राइट डाउन डी, ठीक है, लेटर नहीं लिख रहा, आई एम गोइंग टू पुट अ हाइफन टू शो कि इसका आउटकम में कोई नहीं जीता, राइट, एंड इट सेज दैट बोथ द टीम स्कोर्ड 3 goals each, so 3-3 कर लेते हैं। Now the next 2 matches of France were win, so France wins there, so we will write down the letter of the word France, the first letter, to remember कि कौन जीता था उधर। Now the number of matches we don't know as of now। अब चलते हैं इटली पे। इटली का एक ड्रॉ है, एक विन है, एक लूज है, so which one is the draw and the lose we don't know। पोर्तुगल पे जाते हैं। पोर्तुगल एंड स्पेन के बीच का मैच इज अ ड्रॉ, सो पोर्तुगल एंड स्पेन का मैच इज अ ड्रॉ, राइट, कितने से हमें नहीं पता। नाउ इफ यू लुक एट पोर्तुगल, पोर्तुगल का एक ड्रॉ हो चुका, पोर्तुगल हैज ऑलरेडी लॉस्ट 1, कहां देखो ये फ्रांस से, सॉरी, पोर्तुगल हैज ऑलरेडी लॉस्ट 1, कहां देखो यहां फ्रांस से हार चुका, दैट मींस पोर्तुगल का विन बचा हुआ है, एंड दिस इज द नेक्स्ट मैच दैट पोर्तुगल इज गोइंग टू हैव, सो पोर्तुगल विन्स हियर, कितने कितने गोल्स, नो आइडिया। सो पोर्तुगल का विन भी हो गया, इसका ड्रॉ भी हो गया, इसका लॉस भी हो गया। So if we go to Italy now, because France का भी फिल है, Italy has to win 1, it has to draw 1, so Italy का एक ड्रॉ हो चुका है, Italy का एक लॉस हो चुका है against Portugal, so Italy का एक win must have come against Spain। कितने कितने गोल्स, no idea। So now if we look at Spain, Spain has to lose 2, Spain did lose 2, one match against France, another match against Italy, and the third match against Portugal, it did happen to make a draw, which how many goals, no idea, ठीक है। now we need to find out, हमें तो पता चल गया कौन से मैच का आउटकम क्या है, ठीक है, कौन सा मैच ड्रॉ में है, कौन से मैच में कौन फ्रांस जीता, कौन इटली जीता, we know all of that, पर अब गोल्स कौन कौन से होंगे, कितने कितने होंगे। so if we pay attention, we know that Portugal में जो ड्रॉ है which are going to have the same number of goals, so I'm going to put the letters D and D. D here represent the number of goals Spain has done and Portugal has done. D can be 0, D can be 1, right? ठीक है। Now, if we look at France, France के against में 5 goals होने, out of which 3 goals has been done by Italy. The remaining 2 goals are supposed to happen. So France पे अगर आप ध्यान दोगे तो France has to additionally do 5 goals and additionally has to concede 2 goals, और इसमें इसको 2 wins चाहिए। Now 2 wins can happen in a lot of cases, we can have 3-2 and 2-0, right, we can have 2-1 and 3-1, तो cases बनेंगे यहाँ पे, so we are going to leave it as such। What we will do is फ्रांस का अपन F लिख देते हैं एंड पोर्तुगल का P लिख देते हैं। F here represents the number of goals France has done and the number of goals Portugal has done. So if we look at the additional number of goals that France has to do is another 5, जिसमें से F he has done, so बाकी जो होगा वो मेरा 5 minus F होगा in this, right? And Spain का let's take this as S, ठीक है, स्पेन ने S गोल्स करे थे। If you look at this Spain total goals, it is 4 that Spain has done. So Spain has done S and D. So इधर में जो Spain करेगा, that is going to be 4 minus S minus D, right? Now, if you look at Portugal, Portugal has to total do a number of 7 goals, out of which Portugal has done P goals against France and D goals against Portugal. तो यहां जब पोर्तुगल जीतेगा, दिस इज गोइंग टू बी 7 माइनस P माइनस D, ठीक है। मैं एरो दे देता हूं ताकि आप लोग इसको माइनस से कंफ्यूज ना करो और मैं भी ना करूं, ठीक है। ओके, नाउ if you look at Italy, Italy has to do a total of 10 goals, out of which Italy has already done 3, right? Let's say Italy does I goals here, so this is going to be 7 minus I,
राइट तो हमारे पास ये चीजें वेरिएबल के टर्म्स में आ गई, ठीक है। फ्रांस के मैच अगेंस्ट इटली वी नो द नंबर ऑफ गोल्स, एंड इटली का एंड नो अदर मैच के बारे में हमें कुछ भी पता। लेट्स यूज द लास्ट स्टेटमेंट, स्पेन लॉस्ट वन मैच बाय अ मार्जिन ऑफ 5 गोल्स। सो स्पेन के 3 मैचेस इधर हैं। स्पेन ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू लूज द लास्ट मैच बिकॉज दैट मैच वाज अ ड्रॉ, राइट। सो स्पेन जो है एक मैच 5 गोल के मार्जिन से हारता है। So that means 5 minus f minus s is equal to 5, right? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा f is equal to s. This is one case. One case as in यहां से ये निकल कर आया. If I assume that the match between France and Spain was a case where वो 5 मैच के मार्जिन से हारता है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, फ्रांस को टोटल करने हैं 8 गोल्स, 3 गोल्स इधर कर चुका है, और इधर फ्रांस अगर जीतेगा तो 5-0 से जीतेगा, सो दैट मार्जिन हो जाएगा 5 गोल्स का बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। एंड सिंस फ्रांस हैज टू डू अ टोटल ऑफ 8 गोल्स, 8 गोल्स इधर ही हो चुके हैं, तो फ्रांस ने इधर 0 करा है। अब 0 गोल करके तो वो फ्रांस जीत नहीं सकता अगेंस्ट पोर्तुगल, राइट। इन ऑर्डर टू विन समबडी हैज टू स्कोर एटलीस्ट 1 गोल, नो। तो यानी कि दी 5-0 थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। ये 5-0 जो हुआ है ना वो इधर हुआ है, दिस इज 5 एंड दिस इज 0, सॉरी इट लॉस्ट है ना, तो I इज 5 एंड दिस इज 0, ठीक है। क्योंकि लास्ट मैच तो नहीं लूज हो रहा है, लास्ट मैच इज बीइंग ड्रॉन बाय बिटवीन स्पेन एंड पोर्तुगल। So this is 5-0 outcome. The moment we see 5-0 outcome, we know that I is going to be 5. 4 minus s minus d is equal to 0. That means s plus d is equal to 4. Right? हमें ये पता चल गया. And the moment we get I is equal to 5, we will also know कि 7 minus I कितना हो जाएगा. So this is going to be 2. And this is going to be 7 minus p minus d. हमें नहीं पता कितना है. So इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं. Right? Now, so out of s plus d, we don't know how much is going to be s and how much is going to be d. So, हम लोग Spain versus France, we can't find out the outcome as of now. One thing is for sure, since the match between Portugal and Italy, Portugal wins. So 7 minus p minus d should be greater than 2. क्योंकि 2 गोल से इटली के हैं, तो 2 से ज्यादा ही होने चाहिए. So this tells us that p plus d should be less than 5. यानी कि the maximum value that p plus d can have is 4. Right? And if d is going to be 4, p is going to be 0, s is going to be 0. So we are going to have possibilities. So let's leave it as such, क्योंकि हमारे पास variables ज़्यादा हैं and we don't have any equation or comparisons to make as of now. Okay, first question is, for how many matches can the number of points scored by both the teams be uniquely determined? In other words, ये इन 6 मैचेस में से कितने मैचेस का आउटकम पता है, गोल्स नहीं, आउटकम, as in each match which team won and which team lost. Obviously there are 2 teams playing in a match, एक जीती पता चल गया तो दूसरा कौन हारी वो भी पता है, and also which matches resulted in a draw, ये भी हमें पता है. So 6 सबका पता है हमें, ठीक है. Next, for how many matches can the number of goals scored by both the teams be known or uniquely known? So can we say ये वाला मैच जो है इटली वर्सेस फ्रांस, हमें दोनों टीम का पता है कितना कितना है, एंड दिस पर्टिकुलर मैच विच इज बिटवीन इटली एंड स्पेन, इसके बारे में हमें पता है कितना कितना है. The other possibilities is s plus d is equal to 4 and p plus d less than 5. We don't know what to put here, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, right? So can we say there are only 2 such
मैचेस जिसका आउटकम और द नंबर ऑफ गोल्स फॉर फ्रॉम बोथ द टीम्स इज नो, दो ही है. ओके, नेक्स्ट, goal difference is defined as the difference between the total number of goals scored by any team against all the opponents taken together and the total goals scored by all the opponents taken together against that particular team. Full stop hai. Let's take an example. So what is the goal difference for France? It's 8 minus 5, 3. What is the goal difference for Italy? This is 10 minus 6, 4. What is the goal difference for Spain? This is 7. What is the goal difference for Portugal? Nahi pata. Because we don't know how many goals were scored against it. ठीक है? So this is what goals difference is defined as. The difference between the total number of goals scored by any team against all the opponents taken together and the total goals scored by all the opponents taken together against that particular team. Right? वो दोनों column का difference. Now, based on this definition, the goal difference can be negative or positive depending upon whether any team scored more goals against all other opponent taken together, or all other opponents taken together scored more goals. Okay, so it's not the absolute difference, but it's rather 8 minus 5 being 3, 10 minus 6 being 4, 4 minus 11 being minus 7. ठीक है? Which is the team that has a minimum non-negative goal difference, but it has been able to win a match against one of the teams? Okay, so we need to find out such a team who has minimum number of non-negative goal difference. Non-negative goal difference मतलब जो negative नहीं है, as in 0, 1, 2 and so on. कौन सा हो सकता है? So अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो what you will realize is that the sum of all the goal differences should be 0. आप सोच के देखो. The overall sum of goal differences should be 0. So 3, 8 minus 5 is 3, 10 minus 6 is 4, 4 minus 11 is minus 7. तो ये हमारा already 0 है. So this should also be 0 against Portugal. यानी कि the number of goals against Portugal is going to be 7, right? So that 7 minus 7 is 0. ठीक है? So the sum of the goal differences calculated with positive and negative sign should always add up to give us 0. So can we say Portugal has the minimum non-negative goal difference? 0 है Portugal का भाई साहब. So C is going to be the answer. And Portugal was able to secure a win, right? Because Portugal का 4 points था and that came from 3-1-0. ठीक है. Next question. What was the absolute difference of the number of goals scored by Portugal and France in a match against each other? Portugal and France का जो मैच था उसके बारे में हमें बात करनी है and we need to find out absolute difference of the number of goals. So Portugal and France, as in we are talking about this particular match, right? So absolute difference is required. इन वेरिएबल्स का पीछा अभी छोड़ देते हैं. ठीक है, लेट्स राइट डाउन जो गोल्स हो सकते हैं यहां पे. सो जो चीज हमें फिक्स पता चल गई है उनको वी आर गोइंग टू प्लेस इट. So we know that this is going to be 2. We know that this is 5-0. We don't know how much this is. We don't know the other cases. ठीक है. अब France has to win 2 matches and there are only 5 more goals to do and 2 goals to concede. Suppose उसका
जो 2 मैचेस होने हैं उसमें से एक मैच में वो 2 गोल्स ऑलरेडी खा चुका है. सो वी कैन हैव 3-2 का विन और वी कैन हैव 4-2 का विन. If it has 4-2 का win, then the next match should be 1-0 का win, and here the next match should be 2-0 का win. और we can have a breakdown कि भाई साहब एक मैच goal in each of the 2 matches must have considered against it, so that 5 का हमें group बनाना है. So if this is going to be x, this is going to be 5 minus x, where x is going to be at least 2, right? So we can have 2-1 and 3-1, and that's the only possibility. क्योंकि अगर 2-1 में 3-1 करोगे तो नीचे वाला 2-1 हो जाएगा. So these are the 3 possibilities that we can have for the match between France and Portugal. Actually ये 5 possibilities हैं. ठीक है. Now if you remember, Portugal has to score a total of 7 goals. Out of which Portugal has already done 5 and 2, है ना? पोर्टुगल के 7 गोल्स तो हो चुके हैं ऑलरेडी. सॉरी, नॉट पोर्टुगल के 7 गोल्स हो चुके हैं. पोर्टुगल का अभी तक फिलहाल होल्ड ऑन, इटली का 7 हो चुका है और +3 इटली के 10 इज डन. वी आर डन विद 10 ऑफ इटली. Portugal ka so far has been only 0, and Portugal has to make 7, has to score 7 goals and win 1 match and lose another. So Portugal का इधर 0 है, इसका minimum 3 होगा. So there are 4 more goals that Portugal has in its pocket. Portugal cannot make more than 2 goals here, right? So Portugal का worst case में 2 या 2 से कम होगा. So if we take the extreme case कि चलो इधर 2 ले लेते हैं. So Portugal का we have 2 and 0. So this is definitely going to be 5, such that 2 plus 5 plus 0 is 7, right? So that is about Portugal. And the number of goals against Portugal is also going to be 7. So 5 plus 2, 5 plus 2 जो है वो हमारे पास नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि अगर हम देखो, दिस इज अगेंस्ट पोर्टुगल विच इज गोइंग टू बी दिस, राइट? तो हम लोग the match between Portugal and Spain was drawn. With both teams scoring 3-3 points each. इसका 3-3 है. Spain lost 1 goal at a margin of 5. तो मेरे को लग रहा है मैंने ये वाला गड़बड़ लिख दिया था क्या? So Spain ka so far 3 is done. Spain is going to make 1 goal. So for this one, France has to make 2 or 3. And Spain lost a margin of one of the goals by a margin of 5 goals. तो स्पेन भाई साहब के तो 4 हो गए. इफ यू टेक 1 and 6 तो इटली का अकेले 6 इधर हो जाएगा. एंड देन इटली हैज टू ड्रॉ 1 and lose 1. देखो मैंने ये गलत लिख दिया था ना. द मैच बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन were supposed to be drawn with each scoring 3-3, not Italy and France. बट एनीवेज जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, कितने मैचेस का आउटकम पता है, दैट इज फिक्स्ड. एंड गोल्स कितने का पता है? 2 का पता है. द मैच बिटवीन इटली एंड स्पेन एंड द मैच बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन. ओके,
Uh, if you look at Spain का 1 + 0 + 3 4 goals done. Spain के against में 11 goals होने हैं, out of which 5 + 3 8 + 3 11 is required. So this is going to be 3. Now if we are done with Spain, अब इटली का देख लेते हैं. इटली को 10 गोल्स करने, so Italy makes 5 here. Italy has to make certain number of goals here and certain number of goals here, so which is 2. So 5 + 2 is 7, and then this is going to be 3 3. Now the thing is कि इटली का अगर इधर 2 और इधर 3 है, तो this is 10 for Italy, and the number of goals against Italy is supposed to be 6. So ये 3 + 3 6 + 0. तो इटली के अगेंस्ट भी 6 गोल्स हो चुके हैं. Now let's look at France. France has to get 5 goals against it. So France is going to get 5 goals against it. So 5 goals against it के लिए यहाँ पर ना 0 होना पड़ेगा, because this is 3 plus sorry, not 0, 1 होना पड़ेगा, 1 less. 3 + 1 + 1 is 5, and Spain has to do a total of 8 goals. So this is 2-1. एक नजर दौड़ा लेते हैं. What about France ने कितने गोल करे? 3 + 2 + 3, that is 8. Perfect. How many goals were scored against France? 3 + 1 + 1, which is 5. Let's look at Italy. Italy has to score total 10 goals. Italy scored a 3 goal here, a 2 here because Italy lost, and 5 here. 3 + 2 + 5 is 10. Against Italy, it should be 6. So against Italy, we have a 3 here, we have a 3 here, and we have a 0 here. So this is also 6. जो हमें against चाहिए. Okay. Now let's check Spain first. Spain has to score total 4 goals. So 1 and 0 and 3. And against it, there should be a total of 11 goals. So this is 3 + 5, 8, 8 + 3, 11. So Spain भी हमारा confirm हो जा रहा है. Okay, what about Portugal? Portugal has to score a total of 7 goals. So Portugal क्या 1 गोल इधर, 3 गोल इधर, और 3 गोल इधर, 7. And against it, it should be 7. So we have 2 + 2, 4, 4 + 3, 7. Perfect. So the question asked was the match between France and Portugal, what is the goal difference here? So we can see that the match between France and Portugal, the goal difference is 1. I think France or Portugal ही था. हाँ, 1. Okay. What are the teams that played a drawn match with each other? If you remember, the first match, which is Spain and Italy, was there. And the last match was between नहीं Spain, हाँ नहीं Spain and France था ना पहला वाला. The first is, sorry, France and Italy, and Spain and Portugal. France, Italy, Spain, Portugal. France, Italy, see? Okay. Next, if Portugal scored 2 goals against Italy, if Portugal scores 2 goals against Italy, Portugal और Italy के बीच में, instead of 3-2, what if this is 2? If this is going to be 2, तो इधर 1. If there is a decrease of 1 from Portugal, so Portugal का total goals fix रखने हैं, which is 7. So अगर Portugal का 2 इधर कम हुआ, तो अपन इसको इधर बढ़ा सकते हैं, right? And then France का goal will become 3 instead of 2.
and the draw wala will decrease and it will become 2-2. ठीक है, खैर let's read further. How many goals did Italy score against Spain? So Italy against Spain. Okay, so we will have to follow it through. तो ये 3-3 हटा रहे हैं, ये 2-1 था. वे Italy against Spain, wasn't this one fixed कि 5-0 ही होना चाहिए था? Hold on, let's see what the question is. Question is, if Portugal scored 2 goals against Italy, how many goals did Italy score against Spain? ठीक है. So we don't know about this 5-0. फ्रांस का हमें ये नहीं पता, इसको भी अभी हटा देते हैं. ठीक है. There's so much to erase and redo. So since Spain is going to lose one match by a margin of 5 goals, so this is going to be 5-0, this is going to be 6-1. ठीक है. Now what happens is Italy has a total of 10 goals that it has to do. Italy has already done 1. If it does 5, this is 6. So we can't have a 4-4 here, right? So if it is forced that these are going to be 3-3. 3 plus 1 4, तो ये 6-1 ही होगा. We can't have 5-0 anymore. And if it is not 6-1, if it becomes 7-1, why 6-1? 2 reasons, everyone. Remember, margin of 5 goals will come only from the match between Spain and Italy. This is the only place where this will happen. And the other thing being the number of goals that Italy has to do is 10, right? 6 plus 1, 7, 7 plus, let's say Italy ये वाला है, या दूसरा वाला है, doesn't matter. This is 10. अगर मैं इसको 7 कर दूं तो the match between Italy and France will not get drawn. I don't care about what about the outcomes of or the number of goals in the other matches. If I only keep track of Italy का total number of goals, which is 10, है ना? तो 6 होना चाहिए उसके opponent में. So 6. Italy must score 6 goals against Spain, and precisely the score was 6-1, the match between Italy and Spain. Right? Right, Sono. हाँ रोहित, आते हैं. देखो रोहित, हर बार आपके दिमाग में ये आता है ना कि ये क्वेश्चन टफ है, ये एग्जाम में आएगा कि नहीं यार, मेरी तो फट रही है, मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सिंपल सी बात है कि अगर आपको लाखों कमाने हैं ना, तो कोई ऐसे आपको सिंपल से एग्जाम देके बोलेगा नहीं लाखों कमाने, कि महीने के 4-4 लाख कमा रहे, कि बेटा एकदम सिंपल से एग्जाम करो, आ जाओ, तुम लकी हो. The competition is fierce. So somebody who is going to be able to solve such simple questions, right? Difficult questions in simpler approach or faster will come out on top. उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे. अगर हर किसी को खूब पैसे मिले ना, बिना मेहनत के या बिना किसी कंपटीशन के, तो पूरा सेंस ही बंद खत्म हो जाता है कि किसी को ज्यादा पैसे क्यों मिले. हर कोई खूब कमाएगा, मतलब हर किसी के जेब में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं. ये तो वही केस हो गया ना जहां पर कि इन्फ्लेशन इतना नॉट इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी इतना हाई है कंट्री में कि हर किसी के पास पैसा है. आपके पास आज करोड़ों अरबों रुपए आ जाए, इन्फिनाइट पैसे आ जाए, आप बहुत खर्चा करोगे, बहुत खर्चा करोगे. इतना खर्चा करोगे, आप हर चीज खरीदोगे जिसकी जरूरत नहीं भी है. आप 500 सूट लेकर आओगे, 300 जूते खरीदोगे, 10,000 गाड़ियां खरीदोगे. यार बनने में रॉ मटेरियल खर्चा भी तो आता है. पृथ्वी पे से ही तो निकलता है हर चीज. एक्सक्यूज मी. कितना खरीद लोगे? और आप ही नहीं, हर कोई खरीदेगा. सो देयर इज ऑलवेज, इकोनॉमिक्स हैज टू रिलेट, इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद सप्लाई एंड डिमांड, राइट? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कंट्रोल करना पड़ेगा. सप्लाई कम है, डिमांड कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चलेगा नहीं. ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कंट्रोल करना पड़ेगा. इट्स नॉट परफेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर दे आर रिलेटेड, राइट? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वही चीज जो रियल लाइफ में चलता है उसको एग्जाम में लेके चलो. अगर आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं डिफिकल्ट, तो हाँ है डिफिकल्ट, एग्जाम में छोड़ दें तो मतलब आप सारे सेट छोड़कर आ जाओगे, क्योंकि एग्जाम में होंगे तो ऐसे ही.
गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ऐसे मत हताश हो जाओ, क्वेश्चन दिख रहा है, अरे डर लग रहा है, अरे आधा समझ में नहीं आया, छोड़ दो। ऐसे गिव अप वाला एटीट्यूड से तो कोई नहीं कमा सकता। अगर आपको जिंदगी में कमाना है, अगर आपको जिंदगी में अच्छा करना है, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू विजिट प्लेसेस, केवल दो लोग ऐसा जिंदगी में कर सकते हैं जो कि अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। एक तो अमीर लोग, अगर आप ऑलरेडी अमीर हो, इफ यू हैव यू नो a lot of money, if you don't have a lot of money, your father has hundreds and thousands of crores in his bank account, तो आपके लिए ये है, तब तो आप एमबीए सोच भी नहीं रहे होगे, आप बैठे भी नहीं होगे वाईटी पे ये वीडियो देखने के लिए। सो ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिनके घरों में हजारों करोड़ रुपए नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है आज तक टोटल मिला के, राइट? एंड इफ यू वांट टू गो टू दैट प्लेस वेयर यू कैन हैव 100 crores इन योर लाइफ टाइम, ठीक है, तो आपको भाई तोड़ने पड़ेंगे ये शैकल्स। आराम वाली जिंदगी में नहीं मिलता ये सब, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एज ए स्टूडेंट हमेशा सारे सेट सॉल्व करता हूं, जब जब फंसता हूं तो एज ए स्टूडेंट आप कैसे फंसोगे वैसे फंसोगे, ठीक है? अगर मैं पहले से सारा सॉल्व करके आऊं और मुझे आंसर्स रटे हुए और मैं बोल दूं हाँ इसके बाद ये वो, सो देयर आर गोइंग टू बी केसेस और देयर आर गोइंग टू बी सिनेरियोज वेयर यू कैन गेट स्टक व्हिच यू विल नॉट नो। Some of you are able to answer it well before I do, because I'm thinking कि अगर ये केस सोचा जाए तो क्या हो सकता है, ये केस सोचा जाए तो क्या हो सकता है, because while solving you will come across this first time, second time when you are going to solve the same set, जो पहली बार में 1 घंटा लगा था सॉल्व करने में, 40 मिनट लगे थे, अब आपको 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। The time will reduce to half because you know कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, which all cases will definitely not make sure, not like you will write it down and realize, वो बिना लिखे ही समझ में आने लगेगा। थर्ड टाइम अटेम्प्ट करोगे सेम सेट, नॉट टॉकिंग अबाउट सिमिलर, कोई और सेट उठाओ इसी तरह का, नहीं, मैं इसी को बोल रहा हूं 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 1 दिन बाद फिर से करो सॉल्व, यू विल रियलाइज यू विल टेक 10-15 मिनट्स। तो भाई लाइफ में आप किसी भी चीज में अच्छे हो ना, सपोज आप दौड़ने में अच्छे हो, सपोज आप झूठ बोलने में अच्छे हो, सपोज आप लोगों का मजाक उड़ाने में अच्छे हो, suppose you are brilliant in English, or suppose you are brilliant in computers, whatever you are brilliant in it only because you have been doing that again and again and again. ऐसा नहीं है कि पहली बार ताजमहल बनाने गए और पहली बार कुछ बनाने की कोशिश करी और वो बन गया परफेक्ट, नहीं, जो भी कारीगर लगे थे ताजमहल बनाने में भी उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पहले बनाए थे, अदरवाइज हाउ वुड एनीवन नो कि ये बेस्ट है, इसी से काम करो। So if you want to be the best or good at something, you have to do it again and again and again. Doing it once or twice and running away because you are giving an excuse. आप खुद को बोल रहे हो यार ये डिफिकल्ट है, हो नहीं रहा, नहीं, ये मालूम है असलियत क्या है, आपकी फट रही है करने में, वो हो जाएगा, पर आप डरते हो, you are scared, you are shitless scared. So every time you have this doubt कि ये टफ है, मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एग्जाम में, सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में ये आ रहा है क्योंकि आप डर रहे हो, करना तो है भाई एग्जाम में। इफ यू वांट टू गेट इनटू द टॉप IIMs और द टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया और इवन अब्रॉड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अब्रॉड भी जाना चाहते हो कि चलो यार इंडिया में ना हो रहा कंपटीशन है, बाहर चलते हैं, बाहर में आपको क्या लगता है कम कंपटीशन है, एवरेज एकेड से कहीं भी कर लोगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए भाई, राइट? सो फंसे हुए हो, एंड द ओनली वे टू गेट बेटर इन लाइफ financially, respect wise, position wise, hard work and revisions and practice के अलावा there is no shortcut, ठीक है? सो रोहित, ऐसे सवाल दिमाग में लाना बंद कर दो, ठीक है? So anyone who doesn't have our app, you can download our app and you can unlock your 3 days free trial access to the entire app. All you have to do is you enter your mobile number and then start your free trial. The link to all of this is given in the chat as well as in the description below. You can be one among our toppers this year. You can join our batch, which is comprehensive program, and these are the giveaways, starting with more than 300 engaging videos to more than 10,000 practice questions, more than 75 mocks, and GDPI assistance, books to practice, right?
For this, you can also write down the scholarship test, which is supposed to happen on 9th of July at 11 a.m. Make sure that you register for this test. ठीक है, 90% तक scholarship मिल जाएगा, which is a great thing. On 1st of July at 7 p.m., which is today, Mr. Saral Nasher is going to take a session, how to maximize your score in CAT 2023. So please make sure that you attend this particular session. This is on first come first serve basis, and do share your doubts or your queries regarding it. Well, that's all for today. Thank you everyone. Take care. I'll see you soon again with the next session. Until then, keep studying, be patient, don't be scared. डर दूर करो. एक ही तरीका, फेस करो. भूत से डर लगता है, अंधेरे में जाओ. शेर से डर लगता है, मत जाओ उसके सामने. ठीक है? Don't play with your life. You can play with your feelings.